नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। टुडे इज 16th अगस्त 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। सो आज का हमारा पहला न्यूज है वो है प्रेसिडेंट पे ट्रिब्यूट्स टू मतंगिनी हजरा एंड कनकलता बरुआ। आप देखिए, रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे जो हुआ था उसमें प्रेसिडेंट ने दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेडी को फेलिसिटेट किया, मतलब पोस्टमसली, हु प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। तो इसमें से दो जो लेडी है सबसे, दैट इज द मतंगिनी हाजरा एंड कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड असम से रिलेटेड अगर देखा जाए तो these two ladies played a very dominant role as in our freedom struggle। समझते हैं थोड़ा सा मतंगिनी हाजरा के बारे में समझा जाए तो अर्ली लाइफ एंड डेडिकेशन। शी वाज बोर्न इन 1869 इन होगला विलेज, वेस्ट बंगाल, and Matangini Hazra early life was marked by the poverty and lack of formal education. She married at a young age and was widowed by 18. Devoted to social causes, she emerged as a dedicated freedom fighter। ठीक है, उनकी एज बहुत, क्योंकि पहले के टाइम में लड़कियों की उम्र पहले ही शादी हो जाती थी, तो शी वाज अर्ली मैरिज बट शी बिकम विडोड एट द एज ऑफ 18 and she become a dedicated freedom fighter and she has the influence of Gandhi ji during the nationalist movement। Hazra admirations for Mahatma Gandhi earned her the nickname Gandhi Buri in her village and she actively participated in protest, earning her several arrest and jail sentences। Matangini Hazra, she played a dominant role in Quit India movement, a prominent leader during the Quit India movement in 1942। Hazra led a procession of around 6,000 protesters, mostly women, towards the Tomluk police station and she was shot 3 times by British police during a confrontation and she passed away at the age of 73 while chanting Vande Mataram। Legacy: Matangini Hazra sacrifice inspired revolutionary to establish local government in 1977 and the first statue of a women revolutionary in Kolkata Maidan was dedicated to her and school, streets and neighborhood across Bengal are named after her as a tribute to her immense contributions to the freedom struggle। So for West Bengal, she is one of the most dominant figure। मतंगिनी हाजरा के बारे में देखा जाए तो इन 19 अक्टूबर 1817 इन ऑन 29 सितंबर 1942 उनकी जो स्पेन रहा। शी वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी हु पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। In Quit India movement of 1942, during one procession, she kept shouting Vande Mataram and continued to advance with the national flag even after being shot thrice in front of Tomluk police stations, Midnapur, West Bengal, and her statue has been set up in Kolkata। एंड हाजरा क्रॉसिंग के पास देखिएगा उनका बकायदा स्टैचू भी लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल में अगर आप कभी जाइएगा तो देखिएगा हाजरा क्रॉसिंग है और वहां पर उनके स्टैचू भी लगी हुई है। नेक्स्ट, कनकलता बरुआ के बारे में बोला जाए तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट लेडी हु अर्न ए फेम इन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। So Kanakalata Barua, a symbol of courage, was just 17 years old when she became a martyr। She led the Mrityu Bahini procession to unfurl the tricolor at Gopur police station in Assam during the Quit India movement। Daring spirit थी उनकी, despite the age limit for joining the Mrityu Bahini being 18 and above, Barua determination led her to be an exception। Just 2 days into joining, she was at the head of the procession holding the tricolor। Tragic and in a confrontation with the police at the police station, Barua refused to let go of the flag even as bullets rained down। She fell holding onto the flag until another volunteer took it from her। Her bravery and sacrifice left an indelible mark on the movement। Legacy: Kanakalata Barua's story continues to inspire generations। In her honor, the Coast Guard named a fast patrol vessel ICGS Kanakalata Barua in 2020, ensuring that her legacy lives as a testament to her remarkable spirit and dedications to India's freedom। अपना अगला जो न्यूज है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च द अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम एज पार्ट ऑफ इट्स वेलफेयर इनिशिएटिव, aiming to support 1.1 crore people, especially those hit hard by the pandemic। इसके बारे में और समझा जाए तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, द स्कीम प्राइमरली बेनिफिट्स फैमिली आइडेंटिफाइड थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सर्वे encompassing poor and destitute families। It also extends beyond NFSA beneficiaries to encompass families that received 5,500 pandemic assistance, totaling around 1.05 crore beneficiaries। तो मोस्टली पैंडेमिक के चलते जो लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे उनके लिए काफी राहत की स्कीम थी।
Next, benefits and content, monthly distribution. Eligible beneficiaries can collect Annapurna food packets monthly from fair price shop at no cost. Content details, each packet contain essential item, that is 1 kg gram pulses, sugar and iodized salt, 1 liter soybean refined oil, 100 gram each of chili powder and coriander powder, and 50 gram of turmeric powder. Commissions of APS. APS will receive a 10 rupees commission per packet distributed, incentivize their participations. National Food Security Act. Now, the NFS Act was enacted on 12 September 2013 with retrospective effects from 5th July 2013. It integrates legal entitlement for prevailing food security in initiatives of the Government of India, encompassing the midday meal scheme, integrated child development schemes, and public distribution system. The NFSA enshrines legal rights for individual belonging to eligible households to acquire food grains at subsidized rate. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यही है कि आमतौर पे इसको चालू किया गया था 2013 में, और ये एक लीगल इंटाइटलमेंट देता है फॉर प्रोवाइडिंग द फूड सिक्योरिटी टू द पीपल्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नेक्स्ट फीचर्स क्या है? रिकॉग्नाइजिंग मैटरनिटी. द एनएफएसए एक्ट एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैटरनल हेल्थ बाय इनकम्पासिंग incorporating maternity entitlement within its provisions. Coverage spectrum. While the midday meal scheme and the ICDS are accessible to all, the PDS cater to about 2/3 of the population, that is 75% of the rural areas and 50% in the urban areas. So that is the PDS scheme. Special benefits ये है कि pregnant women, lactating mothers and specific categories of children enjoy the privilege of daily free cereals, enhancing their nutritional security. तो उसका सब्सिडाइज रेट में द एक्ट एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल इशू प्राइसेस फॉर फूड ग्रेन्स ऑफरिंग राइस एट ₹3 per kg, wheat at ₹2 kg and coarse grain at ₹1 kg थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. ठीक है, तो ये कुछ प्राइसेस हैं जो सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा. नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी के बारे में बोला जाए तो मोदी गवर्नमेंट हिस्टोरिक डिसीजन इम्प्रूव्ड एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एंटाइटलमेंट फूड ग्रेन्स फॉर अबाउट 81 करोड़ एनएफएसए बेनिफिशियरीज. Remove financial burden from the poorest of the poor beneficiaries, ensuring nationwide uniformity and effective implementation of NFSA. Next, free of cost food grains as per entitlement for National Food Security Act, and it is basically a scheme effective from 1st January 2023, and it also provides central food subsidy expenses in next 1 year under NFSA and other welfare schemes to increase to over 2 lakh crore. So this is regarding the food security for all. चलिए, नेक्स्ट जो अपना स्कीम है न्यूज है, दैट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशंस. रिसेंटली केरला हाई कोर्ट हैज अंडरस्कोर्ड दैट द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ओनली बी इन्वोक्ड इन केस where an individual activity pose a threat to public order or are detrimental to societies. तो केरला हाई कोर्ट ने ये एक मतलब कह सकते हैं एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया प्रिवेंटिव डिटेंशन पे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन तभी लगाया जा सकता है जब एक आदमी के इंडिविजुअल एक्टिविटीज से थ्रेट टू द पब्लिक ऑर्डर हो रहा और डेट्रिमेंटल टू सोसाइटीज अगर हो रही है, देन ओनली यू कैन इन्वोक द प्रिवेंटिव डिटेंशन. समझते हैं थोड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बोला जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रेफर्स टू एनी डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट ए ट्रायल और कन्विक्शंस बाय ए कोर्ट. मतलब बिना कोई ट्रायल, बिना कोई कन्विक्शंस के आप उसको रख सकते हो. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट टू पनिश एन इंडिविजुअल फॉर ए पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द फ्यूचर. मतलब अगर किसी आदमी को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई क्राइम किया है, बट रादर वो उसको किसी क्राइम करने से रोकने के लिए ये किया जाता है. इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर. ठीक है, एंड अगर बिहाइंड बार्स के बारे में देखा जाए कितने लोग हैं तो लुक एट द नंबर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ओवर पास्ट 5 इयर्स, दैट इज 2017 में 501 और 2000 लगभग आपके रिलीज जो हुए 229. 2018 में ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज है, रिलीज भी ज्यादा हुए हैं. 2019 में 489 रिलीज हुए 279 एंड 2020 में लगभग 741 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जबकि 410 लोगों को छोड़ा भी गया है. 21 483 एंड 242 थोड़ा डिक्रीज हुआ. तो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशंस. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 22 प्रोवाइड कराता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट प्रोटेक्शंस टू इंडिविजुअल हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड. इट हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ which include situation where an individual is detained as part of the criminal investigation. अगर कोई किसी का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग उसको डिटेन किया गया तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है.
एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो डील विद द डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन विच पर्टेन्स टू द डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट ए ट्रायल और कन्विक्शंस. Article 22(4) states that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detentions. The detainee is entitled to know the ground of his detentions, and the state, however, may refuse to divulge the ground of detention if it is in the public interest to do so. अगर public interest के लिए harmful है तो उसको बताने का जरूरी भी नहीं होता है. And the detainee authorities must give the detainee earliest opportunities for making representation against the detentions. ठीक है, तो डिटेंशन के अगेंस्ट भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं. So this is regarding the preventive detentions. Next, who can make law under preventive detention? Parliament has the exclusive power to enact a law for preventive detention for the reasons connected with defense, foreign affairs or security of India. दूसरा, both parliament and state legislature have power to enact a law for preventive detention for the reasons related to the maintenance of public order or maintenance of supplies or services essential to the commodities. And preventive detention must fall within the four corners of Article 21, that is right to life and personal liberty, protection of life and liberty. Read with Article 22 and the statute in questions. For public order to be disturbed, there must be turned to be public disorder. Mere contraventions of law before it can be said to affect public order must affect the community or the public at large. Next, law that provide for preventive detention. In India, various law provide for preventive detention, including the National Security Act of 1980, Unlawful Activities Prevention Act UAPA of 1967, state specific law like the Maintenance of Internal Security Act MISA and Public Safety Act EBA. Under this law, authorities can detain an individual for a specific period of time, typically up to 12 months, without presenting formal charges or conducting a trial. The detention order is issued by a designated authority or government officials and is subject to periodic review by a advisory board. So advisory board भी periodically इसको review करेगी. So this is regarding the आपका preventive detentions act. Last जो है that is the Jamling Lake, Thonglang, Akutpa, Manipur, Northeast India. Jamlang Lake, basically it is situated on the top of Khongtheng mountain ranges, and Jamling is the Lingmai Naga dialect, means puzzle or mystery. And the greatest part of the lake is basically a marshy mass of thick grasses like wheat mixed with reeds and green mosses. And the estimate height of this lake is 2,176 meters above the sea level. वहां पर है ये. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can download all from our Telegram channel at Inspiration IAS. You can also follow our social media page from Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. So thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Thank you. Take care of yourself.